I went from working at Tim Hortons to becoming a 7-figure entrepreneur in just less than 5 years of coming to Canada. And अगर आप सोच रहे हो कि ये थोड़ा unbelievable है and इसके पास अपनी फैमिली का पैसा होगा, किसी ने फंडिंग दी होगी, मेरा बिजनेस completely bootstrapped है, या मेरा कोई शुगर डैडी होगा, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. In this video, I'm going to share how you can do the same. Hi, if you don't know me, my name is Bani and I help immigrants land their dream jobs. I'm going to share my career journey, all the jobs that I did that led me till here, and 7 lessons that I learned along the way so that you don't make the same mistakes. So let me take you back to the very beginning. I came to Canada in 2019 for my masters. शुरू से सपना था कि higher education करनी है तो बाहर से ही करनी है. And because I come from a middle class family, part-time job was a must. My first part-time job was at Tim Hortons, जो कि बहुत मुश्किल बात मिली थी. 2 महीने काम किया, कोविड आ गया, द स्टोर गॉट शट डाउन, सो आई हैड टू लिव ऑन माई GIC. एंड जब सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव हुई, देन आई वर्कड एट वॉटर बेगल, टॉयज आर अस. एंड दिस पार्ट टाइम जर्नी ब्रिंग्स मी टू आवर लेसन नंबर 1, विच इज़ मैंने कभी नॉर्मलाइज नहीं किया कि पार्ट टाइम जॉब्स करना इज़ ओके इवन आफ्टर यू ग्रेजुएट फ्रॉम योर डिग्री. हमेशा क्लियर था कि ये सर्वाइवल के लिए ठीक है, बट बाद में अपनी फील्ड जॉब ही लेनी है. सो दैट्स वाई सितंबर में ग्रेजुएट होते ही आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर फील्ड जॉब्स. अ टिप फॉर यू, आप पहले ही अप्लाई करना शुरू कर देना. मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था. एंड बाय द वे, आई केम फॉर माई मास्टर्स डायरेक्टली आफ्टर माई बैचलर्स. मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था. देयर वर अ फ्यू पीपल हु डिस्करेज मी, जो नेगेटिव थे कि बानी इधर तो जॉब नहीं लग रही, जिनका एक्सपीरियंस है, तेरा तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, अगर तूने वैसे पहले बात की होती लिंक्डइन पे तो मैं मना कर देता कि अभी मत आ. बट आई केप्ट माई हेड डाउन एंड केप्ट अप्लाइंग, एंड आफ्टर अराउंड 2-3 months आई लैंडेड 2 jobs. One was customer success associate in a SaaS company and the other was project leader in a pharma company. So it was a student contract role for 1 year which got extended later, and I chose the project leader one because 2 reasons. उसकी $10,000 salary ज़्यादा थी, and the second one was that it sounded more appealing and more interesting. So this process of landing a field job taught me 2 lessons, which brings us to our lesson number 2, which is negative लोग हर जगह होंगे. Maybe वो अपनी तरफ से logical कुछ बोल रहे हैं, but then negativity does no good. So you have to stay positive. And एक बार ही आपने कोई decision ले लिया, then it's on you to make that decision right, और कोई option नहीं है. And lesson number 3, the secret that I wasn't stressed or anxious in my job hunt phase was expectation setting. मेरे को पता था मेरी क्लास में सारे लोग हैं, मेरे से ज़्यादा experience है, and I am in no competition with them. मेरी अपनी जर्नी है. एंड अनदर थिंग, आई गिव माई सेल्फ 3 months. 3 months में जॉब लग जाना इज अ गुड इनफ टाइम लाइन. सो आई थिंक अगर मेरी 3 months में ना लगती, देन आई माइट हैव पैनिक, बट बिकॉज आई जस्ट फोकस्ड ऑन व्हाट आई कुड कंट्रोल, विच वॉज अप्लाइंग एंड टॉकिंग टू पीपल ऑन लिंक्डइन. आई लैंडेड द जॉब विद इन 3 months, so all was well. I was really happy when I landed this job because I was one of the first few people in my batch to do that, and मेरे batch में ज़्यादा लोग experience ही थे, so that added to the happiness that I did it. But this happiness was short-lived. After a few months I realized कि जो मेरा काम है वो बहुत repetitive है, मेरे को interesting नहीं लग रहा. And on top of that, my manager was also new to the company. I think मेरे से 1 हफ्ते पहले ही वो hire हुए थे. So he was also figuring things out. But I thought let's stick to one company because maybe मैं overthink कर रही हूँ, यही learning curve है, अभी काम मिलना शुरू होगा अच्छा वाला. And then there was this added factor of PR कि 1 साल का experience पूरा कर लेती हूँ, and then I'll think about it. Then I think about a year into the company, my old manager quit. And I got under a new manager who was better. मेरे को permanent कर दिया गया, promotion दी. I shared with him the things that I would find interesting and he did give me those projects. But बाद में मेरे को realize हुआ कि जो मेरे को दूर से चीज़ें exciting लग रही थी वो actual में मुझे interesting नहीं लगी. Another thing is when I used to look at my VP, I thought that अगर मैं VP बन भी जाती हूँ कुछ सालों बाद, I don't like the work that he does. तो मैं क्यों रहूँ इस job में? And that was the moment that I thought it's time to quit this job. This brings us to 2 new lessons. Lesson number 4, your manager decides your learning curve in the company. So anyway, choose a better manager and an okayish company rather than a great company and a terrible manager. Lesson number 5, give some time to things to analyze if it's for you or not. But once significant time has passed and you actually know that this is not for you, there's no point staying in that job, staying in that situation, because the only regret that I had after changing this job was, why didn't I quit earlier? So after this project leader role, I wanted to try something new. So I took a step back and introspected. I realized
realized that I like writing and मेरे को थोड़ा marketing भी interesting लगने लग गई थी, and I was already making content on social media, so I thought let's try social media marketing roles. Then after a while I landed a government job as a social media coordinator with Ontario government. I loved this job. The people were awesome and the culture was great. Culture ऐसा था कि मेरे colleagues मुझे कहते थे कि बानी, if you don't finish this by the end of the day, it's not the end of the world. Imagine that. And that's the reason that I cried while handing my resignation letter to the manager, because the people were just lovely there. But just after 7 months of working there, I quit again. ये 2 रीज़न के कारण था. एक तो था कि मेरे को लगा कि जॉब में हमेशा एक सीलिंग रहेगी and you can't surpass the level of money or the creativity that you can do in a job. So that was one reason that I chose entrepreneurship. Another reason was मेरा बचपन से एक सपना था कि मेरा खुद का कोई वेंचर हो. मेरे को कुछ नहीं पता था कि कैसे होगा, क्या होगा, and मेरी फैमिली में भी कोई बिजनेस नहीं करता था. But I don't know from where the seed came into my head, so I wanted to give it a shot. And I have been ambitious since the very beginning, so I thought this risk is worth taking, so that's why I quit that job and then became a full-time entrepreneur. If you're interested कि मैंने इतना बड़ा decision कैसे लिया, I can talk about that in a separate video, तो मेरे को comments में बता देना if you're interested. This brings us to final 2 lessons. Lesson number 6. If you stay stuck in a place where you don't want to be, better things won't happen. बस आपका bandwidth उसी में चला जाएगा कि मैं इस situation से बाहर कैसे निकलूँ. It would just be a survival mode and you won't be thriving. Only when I started working in that social media role, I got time to breathe and to think what's next. पहली जॉब में तो यही था कि नहीं पसंद आ रही, क्या करना है, इससे बाहर कैसे निकलना है. So remove yourself from situations that don't serve you, and तभी आपको फिर बाद में जब breathing time मिलेगा and थोड़ी awareness आएगी, you can actually decide on what you want to do. The last lesson, lesson number 7. Please believe in yourself and don't be afraid to take risks. जो आपने बचपन में सपने देखे होंगे या अभी अगर आपको कोई चीज़ फैसिनेट करने लग पड़ी है, go after that, because we only have one life. Don't kill that dream inside you. Keep that child alive. I know ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, पर 2 रीजंस हो सकती हैं. उसमें से एक रीज़न ठीक है बट एक नहीं है कि आप रिस्क क्यों नहीं ले रहे. द फर्स्ट रीज़न इज़ आप सिंपली डरे हुए हो. आपको पता नहीं है कि what if it doesn't work out. But take decisions out of love. What if this works out? And then how great your life would be. And second वजह ये हो सकती है कि आप एक्चुअल में अभी जो कर रहे हो वो क्विट नहीं कर सकते. आपको बेटर जॉब चाहिए, बट मे बी आपको PR के लिए वो जॉब 1 साल करनी पड़ेगी. देन आई अंडरस्टैंड दैट, बट स्टिल मेक एन एग्जिट प्लान कि जब आपका वो क्राइटेरिया फुलफिल हो सकता है तो उसके बाद भी आप प्रोक्रेस्टिनेट ना करते रहो. या फिर अगर आप जॉब में हो and आपको कुछ सेविंग्स करनी है, इमरजेंसी फंड करना है, प्लान फॉर दैट इमरजेंसी फंड so that you can quit and then work on the business of your dreams. So I would highly encourage to keep that dream in your life and do pursue that. You owe that to yourself. आपके अलावा कोई और नहीं करेगा, आपको खुद ही करनी पड़ेगी. These were the 7 lessons, and if you are curious about my business, I help immigrants land their field jobs, and till date in over 2.5 years we have helped immigrants land over 36 million in job offers, so that makes me feel really happy. देखो, this is the reward that you get after taking the risk. And this is my first video after a long time on YouTube. I was more focused on Instagram, but now I am on YouTube for good. So if you would like to see content around my journey, how to have a successful career in Canada, and just like fun immigrant things, then do subscribe. I'm excited to see you in the next one.